First, I would like to start in English because the English is most flexible language in the world. You speak right or wrong, they appreciate. In Sanskrit, when you speak little wrong, they curse that you are deceiving angels. You will go to the hell. Therefore, Sanskrit did not spread. Hindi also have 25% same genes. If you practice write incorrect Hindi, then they criticize. So Hindi is having varieties of the language. Eastern Hindi different, Western Hindi different, North Hindi different, Middle Hindi different. Every 50 kilometers Hindi changes. But we have one Hindi which is called Khadi. You can write Khadi like this, or somebody can write like this. This is not Khadi or this is not Khari. That is Khadi, roll tongue back. Khadi means just upright, standing, egoistic. But this ego is great. Because Hindi explains what you can listen, you can write exactly. You speak anything like birds' voice. You can write exactly. Or cows, a cat, a dog, or you speak anything. You can write exactly in the same way in Hindi. When you read it, it will be the same voice. Like cat, meow, meow. You can write meow, meow. See, meow. But in other language, very difficult to write. Therefore, it is not that God has created atmosphere for me in such a way. It is not because of all your love, what I am surviving, that I become dual language. I have dual citizenship in the language, English and Hindi. Now today I am going to explain one important thing. When you practice Kriyayoga meditation sincerely, you will realize each and every ritual what we worship, what we practice on this planet is having the same practical meaning in the field of spirituality. Today I am going to explain again the Christmas Day and Deepavali together. Because I am in India and India celebrates that guest is God. English language is guest to India. We accept English is God at present. Here many are knowing English. Therefore, I would like to explain first this Deepavali in English, then I will explain in Hindi. What a Deep means, and we are very fortunate, everything is given in the holy science. So peaceful for me, I have only one reference book, Holy Science. In this you will get everything, medical, engineering, astronomy, astrology, geography, political science, philosophy, history, ancient, medieval, modern, and future history in this. Whatever try to search, you will get in this. Let us search the Christmas Day and Deepavali, both are one. How? In the Christmas Day, first word related to the Christ. And try to combine all, you will get Christmas Day. Day means knowledge. Knowledge is having only this meaning, science of creation, C for creation. You can write like generation also. Then O for operation, P for preservation. The knowledge of operation, knowledge of preservation, knowledge of creation, knowledge of generation. In knowledge of development, knowledge of change. And the knowledge and power both are the same. Knowledge of creation means power of creation. Knowledge of generation means power of generation. Knowledge of operation means power of operation. Knowledge of
Protection means, preservation means power of preservation. Knowledge of development means knowledge of change. That is power of development, power of change. This means knowledge. D means knowledge. Mass means altogether. You cannot leave anything altogether. Christ means sannyasi. Sannyasi means perfect sannyasi is Mahamatar Babaji. He is able to create anything, to hold the things till we need and disperse it if we don't need. Do not become possessive of creation, what you have created. When work is completed, you can disperse it. The best example is Mahavatar Babaji. And he transferred his knowledge to Lahiri Mahasaya, he demonstrated the same. Same knowledge was transferred to Gyanavatar Swami Tesugiri, he demonstrated the same. Paramahansa Yogananda, Buddha, all demonstrated the same. Jesus Christ demonstrated the same. Therefore, this Christ is called a state of sannyas. Sannyas means that day, complete knowledge. And how to get this? Again, follow the holy signs. Read Vedas, Gospel. First verse of Vedas explains, Parabram alone exists. Parabram is all in the universe. Then you, me, this earth, sky, air, fire, solar system, galaxies, plant kingdom, animal kingdom, and human being, intellectuals working with the logic, human beings working with intuition, that is like Lahiri Mahasaya and prophets, means all together. And each and every creation is having the same aim to have journey towards Christ. This earth, each and every atom molecule have the aim how to transform itself into the Christ. Air is having the aim. How the air is fulfilling its aim, transforming into Christ, breathing process. Air is going in, I am feeling head to toes. I have perfect love. I accept this breath with the concept of holy science. First verse is scripture, Parabram is all in all. When it is going inside, when I feel head to toe, it is presence of Parabram. That air is directly having its spiritual flight from that air consciousness to Christ consciousness. In the same way, earth element, we eat solid food in the form of seeds and fruits like this. That solid food is going inside digestive system. When I feel head to toes and I am feeling solid food there, I accept those solid food in the light of scripture. That is Parabram has become this. Then directly those solid foods having perfect flight, spiritual flight towards Christ consciousness. Apply the same principle when we have the air, when we have the drinking water, when we are touching the earth, we are walking on the earth, you are purifying, you are touching the earth. With your touch, this earth is blessed. Because you have got the power to practice, Parabram has become all. And when you are walking on this earth, wherever you are touching, try to feel head to toes. Try to feel, have greatest love and honor to this earth. When you see the visual or when you touch it, whatever, you get some fragrance of this earth. Every place has different fragrance. Every 100 kilometers, fragrance of clay will change. This is very important things. The head to toes is designed to uplift solid element, water element, fire element, air element, sky element, all the substance associated with the plants, nucleus of the substance like seed, fruits. This head to toe is designed to have constant spiritual flight, how to take all towards the Christ consciousness. And you are so important, you do not know.
Process of eating is so important. Process of breathing is so important. Therefore, each and every action activity is present within head to toe is very, very important. Therefore, it is explained in the Kriyayoga meditation. Increase intensity of awareness. Feel head to toes more and more. Whatever you feel is presence of God. When you practice it, then what happens? Then we are celebrating in India, we call it Deepavali. This is the correct pronunciation. We write Diwali also. I write everything different way, then people should pronounce correctly. Diwali. Diwali. Deepavali. What is Diwali? It's called the lamp is giving the light. Lamp may be oil lamp, or kerosene lamp, or electric lamp. Therefore, when you practice the first principle of holy science, feel head to toes more and more. What you realize, that external light, when we have the oil lamp, what happens? There was a baby, not knowing. Baby was walking. Baby got fire, got 80% burned, and baby died. Oh, then Diwali has become curse for that family where baby died. With that fire of the lamp, this is the lamp. This is the baby touching this fire is just have 80% burned and died. For that family, this is called the curse. In that family, they never celebrate Diwali. This is the law. If somebody died on the day of Diwali, Diwali is not celebrated in that family. It means that Diwali is something unusual. Therefore, Adi Shankaracharya and Jesus Christ and Buddha, Kabir Sahib, Guru Nanak Dev Ji, Sant Ravidas, and all Mahavir Swami, they all celebrated real Diwali. But a real Diwali teaching transferred from Mahatar Babaji to Lahiri Mahasaya. Same teaching is packed in the holy science. What is that Diwali? Try to feel head to toes more and more. When you are feeling head to toes more and more, have perfect love with the head to toes all changes, then what happens? Some radiations were going out. They were angry. You are not loving them. They are leaving this head to toes. When you start feeling head to toes, appreciating it, loving it, they start returning back. When they start returning back, they are getting here. And there is the friction. These are some structures here. We have 7 structures. Then what is the life force returning back? The life force is having friction with this area. That friction creates a divine fire. We call it Yoga Agni. Agni means fire. By practicing unity, united, and the life force is uniting with these places, we get some kind of Agni, divine fire. That divine fire, it just gives light here. Light is dormant, means knowledge is dormant, peace is dormant, knowledge is dormant, joy is dormant. By having that practice, we realize more joy is coming, peace is coming, vitality is coming, everything is coming. This light, therefore in Deepavali, we have 7 lamps. And in evening you will find tomorrow there is 7 lamps. One is called the big lamp. And there are 6 more lamps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. From this lamp, we give the light to the all 6 lamps. And same thing happens here in the real way. From this light is given to the all 6. Then we have the internal, that is called the Deepavali. Internal light, that light we need. When you start observing those light, you get some knocking sound. What is that knocking sound? That is the knowledge. Then door is opened. When you see the knocking sound, then you see the doors are opened. And before this, what happens? There is Dhanteras. Dhanteras means
When you practice Kriyayoga meditation sincerely, you reach to the 13th sphere, 13th universe, that is called the sixth heaven, that is Tapoloka. In that you experience infinite patience. That infinite patience is called the riches, very great riches what we want. What kind of riches we need? Keep on practicing Kriyayoga until you reach to the stage that patience becomes infinite. When patience becomes infinite, tolerance becomes infinite. Then you can have the safety measurement for self and for others. That kind of dhan we want, therefore dhan teras. Teras means tera. Tera means 13th. After that, what happens? Small Diwali. What is small Diwali? Yesterday I have explained Dhanteras. What is small Diwali? When you get it, when patience is increasing and patience reaches to threshold value, then what you see here? Something, vibration, many radiations, that is called small light. That we call Radha in the Indian scriptures. That we call Sita. That we call Radha. In the Bible we call it John. John came, after that Christ will come. Moment you see this various color radiation, it means that is you have now celebration of Choti Diwali, small Diwali. After that big Diwali will come. Therefore this is Dhanteras, small Diwali and big Diwali. Therefore John Baptist came, then Jesus Christ will come. This is the brief interpretation, but by reading it, by listening it, printing the book, making the notes is not going to solve the problems. You have to practice and practice and serve more and more. This will open your all hidden knowledge. We have 7 books. They are sealed. Who can open it? Only you can open it. You can seal it. Who is practicing Kriyayoga, they have power to open it and to seal it. This is the brief interpretation, I know. This is very short and brief, very compact. If you forgot, don't worry. Practice is important. Now I'm going to explain in Hindi. अब इसको थोड़ा हिंदी में बता दें. All credit goes to the North America. I never spoke English in India. The moment I went in the 1994, I was only teaching Kriyayoga in Hindi, but all Western people called the white race, they were sitting in the class. I was asking, why you are sitting in class? I don't speak in English. They say, we feel sleep nice. Then I was advertised that somebody came from India, when you go to the class, you sleep very nice. This was advertisement. Then after a few months, the big demand was coming that at least I speak one line. Dr. Manuel Videshi, he told that he should speak one line is sufficient. People do not understand Hindi here. My program was in Vishnu Temple. They gave me half an hour to give some introductory class. I think they got scared. They said, no, we don't have time, only 15 minutes. After they said, no, we don't have time, only 10 minutes. I say, I need only 5 minutes. In 5 minutes, I spoke only English. Around 500 people came to the class after that. Then I became bilingual from that. When I decided I'm going to take 1 week only English class, you can't believe I have forgotten Hindi completely. My imagination, my dream, my thinking, all were in English. Credit goes to the Lahari Master. Detail I will not tell you. Everything in English. Then I thought when I will go to the Allahabad,
People say, what happened to him? He forgot in Hindi. Then on 7th day, I became bilingual. Therefore, credit goes to North America, with the help of North America. Especially, nobody should mind it, especially what we call white race, and we criticize them because of their love of soul. Ashram starts expanding, Kriyayoga starts expanding. Therefore, when Uganda was having problem in North America, who were creator of problems, Indians were living there, they advertised wrongly. Some Indians went from here, they advertised wrongly, program were cancelled. Case was lodged against Yogananda. And it was advertised that he hypnotizes people. At last, all cases were finished. The Daya Mata group, Mera Mata group, Gyar Mata group, all they join together, they make program up. Therefore it happens. Opposition happens, we should not mind it. But we should have no opposition for anyone. We should never criticize anyone. We have to follow our own path. There are persons who are doing opposition and who just are busy in opposing the things. They are in fact, they are power, they are trying to explain that you can win this opposition, you can demonstrate your loving power. Same thing happened with the Jesus Christ, with the Buddha, with Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda. Everybody faced the same condition. Guru Nanak Dev Ji here, Saint Kabir Das Ji, Sant Ravidas, and Adi Shankaracharya, they all face the same problem. In fact, that is not the problem. When you are walking, earth is opposing, gravitational pull. If earth will not oppose, you cannot walk. Therefore, opposition is a very important tool for spiritual growth. That's why I am telling you that when you see some white race, people think that I am Christian. They blame I am CIA agent. I told us I am having farm, get and fill, you will get a big salary. When I was teaching Quran, they say I am ISI agent. Therefore, you know what Holy Science says. I believe in this. And I live this, I try to live this principle as much as possible. The purpose of teaching of Kriya Yoga is to show as clearly as possible there is an essential unity in all religion. If I am Muslim, then I must feel that I am real Christian also. Then I have to worship Jesus Christ also. I am real Hindu also. I am real Sanatan Dharmi. I am real follower of Buddha, Kabir Sahib, Guru Nanak Dev Ji, Sant Ravidas, Moses, Abraham. If not, then I am not practicing truth. This is what principle I try to live it. And if nobody follow, I was living alone. And now we are having a big group in all over the world. At present, around 17 million they are viewers in all over the world. But they don't subscribe. They think if they will subscribe more, there will be big advertisement of the Kriya Yoga. But a viewer list, they can't stop. I was searching, I got 17 million viewers every day. It means this principle will expand. Power of unity will expand. Division power will reduce. Therefore, we have perfect hope that one day this will be a successful movement. Weapons manufacture and selling and purchasing will stop. If anybody is doing, it will be declared evil work. And therefore license has to be cancelled. Being license, purchasing tools of license like gun, pistol, revolver is called evil work. We don't need it. We have to help each other. We do not need anything which creates a terror and fear. Next thing, jail has to be stopped. Jail should be Kriya Yoga meditation center. If somebody is having some
ignorance, having problem, they will come there, they will learn. They have good food, they practice, and they will learn how to work. Therefore, jail should give that facility. You have done the worst, do not worry, come here, learn how to live the best life. This all has to be done, and I believe your will, good support, it will manage. Now come to the Hindi. आइए हम लोग हिंदी में. One thing I forget to tell. When Yoganda was having problem, then he went to the Mexico. He was praying to the Mother Goddess. Now I want to go India back. In America I can't work. He got internal voice. In India nobody will listen to you. You are meant for the North America. Then he stopped thinking. Therefore, India nobody listened. Why? There was not time. It is not a negative thing. India is like mother. Mother distributed their children. Children of Mother India went to all over the world. They are doing good work there, but they do only bad work. They purchase big cars, they are busy in paying mortgage. They have big houses, they are busy in paying the mortgage. They should learn lessons from the Americans, Europeans, Canadians. Do not be sticky to one place. In Canada, they feel the whole Canada is their home. They feel America also their home. They don't stick to the one things, and they believe their children will be independent. They are not going to store the money for their daughter's children, son's children, their children, their children. They are going to store all money for one family. In America, they don't do it. In Canada, in Europe, they don't do it. We have to learn lesson from them. Now come to the Hindi. आइए हिंदी में हम लोग समझें. अब हमारा विकास का समय आ गया है. विकास किसमें होता है? जुड़ने में. सबसे पहले हमारे जो प्रैक्टिस, जिसको रिलीजियस प्रैक्टिसेस कहते हैं, जिसके नाम पर हम बंट गए हैं, ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सनातनी है, ये बुद्धिस्ट है, जैन है, ये सिख है, ये यहूदी है. इतने प्रकार से जो बंटवारा हुआ है, इसका कारण क्या है बंटवारे का? धर्म की गलत व्याख्या. धर्म का काम है जोड़ना, लेकिन जो ये धर्म कहे जाते हैं, ये तो समाज को बांट दिया. अगर हम मुस्लिम पैदा हुए तो हम जिंदगी भर मुस्लिम ही रहेंगे. हम ये नहीं कह सकते कि हम क्रिश्चियन भी हैं. हम क्रिश्चियन पैदा हो गए तो जिंदगी भर हम क्रिश्चियन ही रहेंगे. हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं. तो ये शिक्षा जो आप क्रिया के माध्यम से, जो क्रिया की शिक्षा हम लोग ले रहे हैं, यह स्पष्ट करता है कि जिसको रिलीजन कहते हैं, जिसको धर्म कहते हैं, धर्म का अर्थ है जोड़ना. रिलीजन और धर्म. धर्म हिंदी में है, रिलीजन उसका अंग्रेजी में है. आप रिलीजन का ओरिजिन देखिए तो रेलिगियर से बना है. रेलिगियर का मतलब होता है जोड़ना. धर्म का मतलब क्या होता है? जो जोड़ता है. धर्म बना ध्री धातु से. ध्री क्या है? आधा धा है और प्लस री है. री कहते हैं पवित्र तत्व को. धा कहते हैं जो धारण किए हैं. जो धारण किए पवित्र तत्व है, ये गंदगी नहीं है. जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, ये अधूरा ज्ञान है. एटम मॉलिक्यूल अधूरा ज्ञान है. जो धारण किए पवित्र तत्व है ये. तो इससे हम जुड़े हैं. इससे जुड़ेंगे तो आपसे जुड़ेंगे. तो इससे धर्म का एक ही काम है, जोड़ना. अगर धर्म हमें तोड़ता है तो वो धर्म नहीं है. अभी जितने सो कॉल धर्म हैं, ये सब मानव को बांट दिए हैं. ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, ये बुद्धिस्ट है, ये जैन है, यहूदी है, ये सिख है, ये कबीरपंथी हैं. इतना बंटवारा पूछिए नहीं. तो धर्म नहीं है वो. जो चीज बांटता है उसको संप्रदाय कहते हैं. वो संप्रदाय है.
जिसको धर्म कहते हैं वो संप्रदाय है वो। तो संप्रदाय को हम धर्म मान लिखे हैं। जैसे सच क्या है, ये पृथ्वी सच होती, सच नहीं, पृथ्वी होती ही नहीं है। आंखों से देख रहे हैं तो मान रहे कि होती है, तो जो गलत उसी को हम सच मान बैठे। होली साइंस में क्या लिखा है कि जिस चीज को आप माप सकते हैं, जिस चीज को तौल सकते हैं, जिस चीज को छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, उसको कहते हैं एटम, परमाणु। ये परमाणु इकट्ठा होकर के अणु के रूप में बनता है। अणु इकट्ठा होकर के सब पृथ्वी है। इसमें लिखा हो कि होता ही नहीं है, ये परमाणु है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल भी नहीं है, तो पृथ्वी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लगता है कि है। यही तो अज्ञानता है। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं, कहते नहीं कि जय जानत जग जाई हेराई, जिसको जान लेने पर ये जो दृश्य जगत है गायब हो जाता है। गायब होने क्या अर्थ है? जैसे आप बैठे हैं, हमने आंख बंद किया तो आप गायब हो गए, लेकिन आप तब भी तो बैठे हैं आप। तो जय जानत जग जाई हेराई, इसका अर्थ क्या है? जिसको जान लेने पर जग का सही रूप पता चलता है। अभी पता चलता कि आप यहीं बैठे हैं, लेकिन वास्तव में आप सर्वव्यापी हैं। कहीं से भी हम आपको पकड़ सकते हैं, कहीं से भी हम आपको देख सकते हैं। आप केवल यही नहीं है। किस तरह से आप देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो होली साइंस यही कहता है, और सब इसी को पाने का प्रयास करते हैं। जब इसको पा जाते हैं तो उनको ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? हम सिर से पैर की उंगली तक जब चाहे प्रकट कर लें, बना लें, जब चाहे डिस्पर्स कर दें, फिर चाहे बना लें। जापान में काम करना है, हम जापान की तरह शरीर को बना लें। अफ्रीका में काम करना है, अफ्रीका की तरह बना ले। यूरोप में, अमेरिका में काम करना है, उस तरह से हो जाए। इंडिया में काम करना है तो इस तरह से हो जाए। ये ज्ञान है, सबके पास है। इसे महाअवतार बाबा जब प्रकट होते हैं, कभी दाढ़ी के साथ, कभी बिना दाढ़ी के, तो इसके अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। तो ये सब चीज जानिए जो आप पढ़ रहे हैं, सच जानने के लिए पढ़ रहे हैं। तो सच जानने की जो परंपरा जो पढ़ाई गई, उसको जब लोगों ने सुना तो उसे गलत व्याख्या किया। जैसे दीपावली पर्व, हम दीपावली पर्व मना रहे हैं, इसको किस तरह से मनाते हैं? देखिए, हम धनतेरस मनाए, कल की धनतेरस, फिर आज है छोटी दिवाली, फिर होगी बड़ी दिवाली। ये धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ये क्या है? पश्चिम में क्रिसमस डे मनाते हैं। जब आप क्रिया ध्यान करते हैं तो पता चलता है कि दीपावली का जो पर्व है यही क्रिसमस डे भी है, या जो क्रिसमस डे मनाते हैं वही दीपावली भी है। क्योंकि मनाने का तरीका है, ये समझ में नहीं आता है, दोनों दो तरह लगता है। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो पता चलेगा दीपावली का पर्व क्रिसमस डे है। ये इसको क्रिसमस डे क्यों कहते हैं? क्रिसमस में देखिए क्राइस्ट है, इसमें देखिए ये क्राइस्ट है। क्राइस्ट मतलब होता है सन्यास, सन्यासी। सन्यासी का उच्चतम रूप है महाअवतार बाबा जी। इन्होंने सोने की महल बनाया लाड़ी मासा की दीक्षा के लिए, और जब दीक्षा पूरी हो गई तो पोसेसिव नहीं थे, करे हमने बनाया रख ले, इतिहास बताएगा। अरे कोई महाअवतार बाबा है, सोने की महल बनाए थे, इसको पढ़ा रहने दो, दुनिया देखेगी कि हम कितने ज्ञानी हैं। ऐसा नहीं है, डिस्पर्स कर दिया। वहीं पर लाड़ी मासे को भूख लगी, एक घड़ा था, कहते भूख लगी है, कहन हाँ, कहन उसी में से निकाल लो खाना। तो जो जो मन था सब निकाल के खाए। तो देखते पानी कहाँ है, कहन उसी में पानी भी है, खाना गायब हो गया, पानी आ गया। ये है सन्यासी की शक्ति। सन्यासी की शक्ति में अपरिग्रह होता है। कोई चीज प्रकट करते तो पोसेसिव नहीं होते कि उसको पकड़े ही रहे, काम खत्म हुआ डिस्पर्स कर देते।
तो देखिए क्रिसमस डे में जो ये क्राइस्ट है, ये क्राइस्ट से संबंधित है, सन्यासी से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को सन्यासी बनने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। कैसे करेंगे प्रयत्न? बड़ा आसान है, क्रिया योग ध्यान करते रहिए, सेवा करते रहिए। हमारी यात्रा हम जहां से वहीं से शुरू होगी और हम सन्यासी बन जाएंगे। एक हमारा एग्जाम्पल लीजिए, हम बचपन से बीमार रहते थे। कारण क्या था? बचपन से क्रिया ध्यान हम अपने आप तो कोई नहीं होता, गुरुदेव थे साथ में, हम पहचान नहीं पाए। क्रिया ध्यान बड़ी गहराई में होता था और खाना खाते थे घर वाला, बीमार हो जाते थे। पूरा बचपन ही बीमार रहे, बीएससी फाइनल तक बीमार ही रहे। तो उसके बाद अब देखिए, उतनी बीमारी के बाद जिसको डिप्थीरिया हो, निमोनिया हुआ हो, अनेक बीमारियां हो, जुकाम हमेशा रहता हो, आज हम वही तो हैं। जब हम पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, जब यूनिवर्सिटी में थे, सब में थे, हमारी शक्ति इतनी ज्यादा है, पहले कुछ थी ही नहीं इसकी तुलना में। अब चाहे सोए या ना सोए, जगे या ना जगे, कितनी देर तक काम करें, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर हम उस अवस्था से प्रकट होकर के, रूपांतरित होकर के इस रूप में आ गए हैं, मोटा चश्मा लगाते थे जैसे बोतल लगाए हो, -20 डायप्टर था मायोपिया, तो -20 डायप्टर बहुत ज्यादा होती है। अब तो नहीं है ना। हमको जो कुछ भी मालूम, हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम गांव में पैदा हुए हैं, मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए हैं। आजकल के समय में उसको गरीब ही कह लेंगे आप। वहीं पैदा हुए, वहीं रहे, रूपांतरण हुआ कि नहीं? हम नहीं कहते कि हमको आप पैगंबर, प्रॉफिट मानिए, रियलाइज मास्टर मानिए, एक सामान्य के रूप में मानिए। एक सामान्य व्यक्ति अभ्यास करके यहाँ तक आया कि नहीं? होली साइंस की शिक्षा देने में, इसके माध्यम से सेवा करने में सफलता है कि नहीं? यहीं पर कितने लोग आए, सब बीमार ठीक हो जाते हैं। अभी भी कुछ इंडिया के लोग हैं, विदेश में कुछ यहाँ पर है, एडवर्टाइज करते हैं कि क्रियायोग करने से लोग बीमार हो जाते हैं। पूरे इस एडवर्टाइजमेंट में लगे हैं। मेनी पर्सन्स इन इंडिया एंड इंडियंस हु आर लिविंग इन द आउट ऑफ इंडिया, दे एडवर्टाइज दैट यू प्रैक्टिस क्रियायोग यू विल बी सिक, बट रियलिटी इज दैट प्रैक्टिस क्रियायोग यू विल बी रिलीव्ड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इलनेस, सिकनेस। जब क्रियायोग ध्यान करते हैं, सारी बीमारी खत्म हो जाती है। तो इसका भी जो एडवर्टीजमेंट होता है, जो इंडियन बेस्ड लोग बाहर हैं, इंडिया के लोग जो बाहर गए हैं, जैसे कोई फिजी गया, कोई गयाना गया, कोई ट्रिनिडाड गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कनाडा अमेरिका गया, वो लोग ये मानते हैं क्रिया करने से बीमारी आती है, जबकि वही ठीक भी हुए हैं। जो कहते वही ठीक भी हुए हैं। इस तरीके से जो एडवर्टीजमेंट होता है, ये बहुत अच्छा है कि अब सिद्ध करिए कि क्रिया से बीमारी दूर होती है, तो उसका काउंटर करिए। तो इसे आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो क्रिसमस डे है, दीपावली का पर्व है, कैसे? क्रियायोग क्या है? क्रियायोग में अपने अंदर एकाग्रता बढ़ाते हैं। जब अपने अंदर एकाग्रता बढ़ाते हैं तो अपना स्वरूप क्या है? ये 14 भुवन है। ये इसमें 14 भुवन विद्यमान है। तो 14 भुवन में 7 पाताल, 7 स्वर्ग है। इसको कल हमने बताया था, 7 पाताल और 7 स्वर्ग, इस तरह से टोटल 14। इस 14 भुवन में जो 13वां है, उसको तपोलोक कहते हैं। आप होली साइंस में देखिए, मिलेगा। तपोलोक में क्या होता है? हमारा धैर्य अनंत हो जाता है। जब धैर्य अनंत हो जाता है, इसी धैर्य को कहा गया धन। यही हमारा मूल धन है। इस धन की आवश्यकता है। ये कब मिलता है? 13वें भुवन में। जब क्रिया ध्यान करते करते हम अपने 14 भुवन की यात्रा करते हैं, जब 13वें भुवन में पहुंचते हैं, तो उस धन की प्राप्ति होती है। जिस धन को प्राप्त होने पर फिर क्या पता चलता है? छोटी दिवाली आएगी, भूमध्य के सामने ज्ञान दिखने लगता है, अतीत, वर्तमान, भविष्य का दर्शन होने लगता है। अगर आपको दर्शन होता है तो उसके बाद आप साइलेंस रहिए, देखिए उसके बाद क्या होता है। वाइटलिटी बढ़ती, पीस बढ़ता है, शांति बढ़ती, ज्ञान बढ़ता है। अनेक प्रकार के जो हमारी गलत आदतें हैं
घृणा करने की। अच्छा काम करना हो तो लज्जा आती है। और परिवारवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद, संकीर्णतावाद, एक जैसे मुर्गी का दरवा होता है, उस तरह से रहना सीखते थे। सब चीजें खत्म हो जाती हैं। पूरा ब्रह्मांड एक घर ये मान लेते हैं। कब मान लेते हैं? जब ये धैर्य मिल जाता है, जिसको धन कहते हैं। तो ये धन कब मिलता है? 13वें भुवन में, इसलिए इसको धनतेरस कहते हैं। धनतेरस मिला, फिर क्या होता है? अरे जब अनंत अनंत हो गया, धैर्य अनंत हो गया, तो अपने आप भूमध्य के सामने आपको कुछ दिखता है। क्या दिखेगा? कल्पना मत करिए। जो भी दिखता है, काला, पीला, नीला, कुछ तो दिखेगा। वो ज्ञान है, वो प्रकाश है। जब उसको आप ज्ञान प्रकाश को अपने स्वीकार कर लेते हैं, तो वही छोटी दिवाली है। उसी बाइबल में लिखा है, जॉन आए, अपने कहते हैं राधा राधा कहते रहिए, कृष्ण चले आएंगे। भूमध्य सामने देखते रहिए, सिर से पैर की उंगली तक इसमें शक्ति जगाएगी। विष्णु की शक्ति जो कृष्ण की शक्ति है, राम की शक्ति जो विष्णु की शक्ति है। विष्णु की शक्ति क्या है? सुरक्षात्मक शक्ति, जिसको अहिंसा कहते हैं। तो जब आपके अंदर धनतेरस अनंत धैर्य प्रकट होता है, तो भूमध्य के सामने जो दिखता है वो ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है। जिसको स्वीकार कर लेते हैं, तो ही बाइबल में जॉन कहा गया है। जॉन पहले आएंगे, फिर क्राइस्ट आएंगे। क्राइस्ट क्या है? बड़ी दिवाली। क्राइस्ट को बड़ी दिवाली क्यों कहा गया है? जब क्राइस्ट आते हैं तो क्या होता है? स्टार इन द ईस्ट, क्राइस्ट इज बॉर्न। स्टार किसको कहते हैं? स्टार में देखिए 5 आर्म होता है। ये है सिर, 2 हाथ, 2 पैर। आप ऐसे उठाते हैं तो पूरा स्टार की तरह बॉडी बनती है कि नहीं? जब पता चला कि अरे ये है क्या, ये तो ज्ञान है, इसको इसलिए सफेद से दिखाते हैं प्रकाश के। ये रिचुअल है जो हम रंग रहे हैं। तो सफेद मतलब क्या है? ज्ञान। जब पता चला कि ज्ञान रूप है, शक्ति रूप, शांति रूप है, तो कहाँ पता चला? ईस्ट में। ईस्ट कहाँ? सिर और रीढ़ की तरफ। बाहर क्या? पश्चिम। अंदर की ओर है पूरब। स्टार इन द ईस्ट एंड क्राइस्ट इज बॉर्न। आपके अंदर जब इसमें एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते, जब धनतेरस हुआ, धैर्य अनंत हुआ, भूमध्य के सामने ज्ञान प्रकट होने लगा, तो उसके बाद फिर ये 7 ज्ञान के दीप जल जाते हैं। ज्ञान का दीप है, शक्ति का दीप है, शांति का दीप है, आनंद का दीप है, अमरता का दीप है। उसके जगते ही हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। हम तो क्राइस्ट हो गए, सन्यासी हो गए। ये है दीपावली का पर्व। इस तरह से दीपावली मनाते हैं। जो यहाँ पर दगाते हैं, आवाज करते हैं, पटाखा दगाते हैं, है क्या? देखिए उस पर कोई न कोई मरता है हर साल। तो जब ये माथे के सामने दिखाई पड़ता है, जिसको छोटी दिवाली कहते हैं, जॉन कहते हैं, राधा कहते हैं, सीता कहते हैं, तो उसी समय एक आवाज सुनाई पड़ती है, खटखट की आवाज। कैसी होती है इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कोई गंगा की धारा कहते, कोई जमुना की धारा कहते, कोई जॉर्डन की धारा कहते हैं। तो जब आवाज सुनाई पड़ती है, जब उसको सुनते रहिए, तो उस आवाज को सुना जाता है। बाहर का पटाखा दगा के नहीं, बाहर क्रैकर्स दगा के नहीं। जो फायर सेरेमनी करते हैं, दैट इज रिचुअल्स, दैट इज डेंजरस, देन यू आर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। जो आप करते हैं, ये पटाखा दगाते हैं, सब चीज दगाते हैं, जो फायर सेरेमनी करते हैं, उससे प्रदूषित होता वायुमंडल, जो पेड़ों के लिए ठीक नहीं, जानवर के लिए ठीक नहीं, हम लोगों के लिए ठीक नहीं। तो दीपावली की परंपरा एक दिन हर जगह फैल जाएगी। पटाखे बनना बंद हो जाएंगे। जो फायर सेरेमनी होती है, जो क्रैकर्स चलाते हैं दुनिया भर के, सब चीज खत्म हो जाएगी, कम हो रही। देखिए धीरे धीरे कम हो रही है। ताई हम लोग मिल करके इतना बढ़िया क्रिया ध्यान करें, पृथ्वी का माहौल शांत प्रिय हो जाए, प्रेममय हो जाए। ये प्रचार हो जाए कि जो हथियार बनाते हैं जो भी देश, इविल वर्क है। जो खरीदते हैं ये भी इविल वर्क है। कोई भी लाइसेंस लेता है, इविल वर्क है। जो लाइसेंस देता है ये भी इविल वर्क है। ये सब हो जाएगा। बस आप अभ्यास करिए, शंका मत करिए कि नहीं होगा। शंका करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? जैसे आपको कहीं जाना है, वो जगह समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है, बार बार मन करता पूछ ले। वहां जाने लगे तो बहुत टाइम लगा,
वही रास्ता पता है कहाँ जाना है, तो आप आराम से चले जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। ऐसे आपको अगर विश्वास नहीं जो कहा जा रहा है, तो क्रिया का अभ्यास करते बार बार दिमाग में आएगा कितना समय लगेगा सीखने में, कब तक सीखेंगे हम। और आप पूरी तरह से विश्वास है जो कह रहे हैं इसको सुनने में, स्वीकार करने में, तो प्रैक्टिस में लग जाइए, सेवा में लग जाइए, फिर हर चीजें फटाफट होने लगती हैं। जैसे कल हम ड्राइव करके रात में कहीं जा रहे थे, हम थे, हमारे साथ दीवान जी थे। तो जाते समय पूछना पड़ता था वहां जाना है, वहां जाना है। जाते समय थोड़ा मैं सजग था, लौटते समय हमको ध्यान कर रहे थे, किसी काम में लग गए। आंख खोले तो लगा कि सब तो दूसरी जगह आ गई, जबकि वही जगह थी और नहीं दिखाई पड़ने लगी। तो शंका हो गई, जा कहाँ रहे हैं। जब जा कहाँ रहे शंका हो गई, तो लगा कि आश्रम आने में बहुत देर लग गया, इतना टाइम कैसे लग गया। ऐसे जब जा रहे थे हम, बीच में जब रह गया 2 किलोमीटर, तो वहां से डाउट हो गया कि रास्ता यही है कि गलत है। तो 2 किलोमीटर लगा कि 2 दिन के बराबर है। अगर आपको डाउट होगा कि अभ्यास करने में आपकी समस्या नहीं जाएगी, तो क्रिया सीखने में कठिनाई होगी। I want to tell one example. Yesterday I went to the farmhouse in the night. Around 9 I left from here. When I reached there, this way was clear. After some times, I start thinking something. When I open my eyes, it looks everything different. Which is new place? Where we are going? We are having doubt. But place was only 2 kilometers from there. That 2 kilometers appears, which is so many hours, because we had doubt that this path may not be correct. When we have doubt, then we get injury by the time. In the same, when I was returning back, after some time I start thinking, I start some meditating, doing some work. And again I opened my eyes. Oh, where we are going? It is the wrong path. This is not the clear path. Then I start feeling, oh, it is somewhere else we are going. Then we verified for somebody, this is the clear path. Then from around 7 kilometers behind, 9 kilometers behind, it looks that like a 90 kilometers. Because of the doubt of the path. You have doubt that Kriya is not going to work for you, then time will create injury. अगर आपको डाउट है कि क्रिया से नहीं होगा, तो जानते हैं बहुत समय लगेगा सुख और शांति पाने में। इसे डाउट मत करिए, खूब अभ्यास करिए, जैसा हम बता दें वैसे करने का प्रयास करिए, और आवश्यकता समझेंगे कि आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं होगी तो संजय पीजीआई है लखनऊ में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हम प्रयास करेंगे कि आपको एडमिशन करा दें। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ दवा देना, दवा खिलाना, डॉक्टरों का ये सलाह ये नहीं माना जाता, ऐसा नहीं है। Do not have this idea that we don't recommend medical doctors. We recommend, but I believe if you practice, you will be healed. If you are not able to practice, then I have many relations with the good hospitals like All India Medical Institute, Sanjay PGI Lucknow. I will have an arrangement to send you there. But do not have this thought, I am against medical profession. No. I accept it. But if you believe in Kriyayoga, you don't need it. If you don't believe this, then you need it. हम मेडिकल प्रोफेशन के अगेंस्ट में नहीं है। उसकी आवश्यकता पड़ती जब क्रियायोग में विश्वास नहीं जमता है, डाउट होता है, कितना समय लगेगा ये बार बार प्रश्न आता है, तब आपको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। ये था आज के लिए। दिस इज फॉर टुडे। हम 2 मिनट बाद बैठेंगे, किसी को मिलना होगा तो आराम से मिलिएगा। I will sit here after 2 minutes, then anybody want to meet, you can come.